हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं ये है बिल के ऊपर, जो बिल रिसेंटली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन 2016 के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, so guys, first you have to know that which ministry has released this bill. This has been released by Union Ministry of Women and Child Development, right? Okay, and it was released on the occasion of National Girl Child Day, which was celebrated on 24th of January 2017. All right, so अच्छा, ऑन किस मैंडेट पे इस बिल को बनाया गया है? इस बिल को बनाया गया है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 के तहत। ये ध्यान रखना है हमें, है ना। नेक्स्ट, चलिए अब 2013 वाला, क्योंकि 2013 के तहत उसके मैंडेट के तहत इस बिल को बनाया गया, तो पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013, राइट। सो देखिएगा, इस 2013 वाला नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन का एम कुछ इस प्रकार के थे। राइट ऑफ चिल्ड्रन वॉज फोकस्ड ऑन दीज डिफरेंट एरियाज। द एरियाज आर सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, education, development, protection and participation of children. All right. Mm, okay, and one more thing, the main focus was on children with disabilities. When the children facing disabilities were mainly focused on this, the policy of 2013, right, related to children. But the recent policy of 2016 is a bit holistic type. I mean, वो ज़्यादा broad area cover करता है. Right, so let's see the features of 2013 policy. See, as I told you already, that it focused on the prevention of disabilities, right, in early intervention stages of the stage where the children is stuck with, right, and it will provide the rehabilitation and social support measure to those children's. All right, means on the very first stages, they'll detect the very first stages on which the children are struck with disabilities, and on that very stage what they'll do is they'll just try to rehabilitate or provide the social support measures to those children, so that they can be tackled off from the situation of disabilities where they are at present. All right, the second feature of 2013 policy was like the vulnerable children were to be tracked. They were to be tracked, and the access of right to education was given to them. All right. Now the third point of the policy was the schools which were to be like poly like the government has made policies about the schools. Those schools should be inclusive. I mean, जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है, then and he's उसका पैर नहीं है, then they should provide the platform so that children could reach out the class through that platform. I mean, that kind of inclusivity should be there for disabled person. Not only disabled person, for every person, for every children's, but disabilities should be the one of the main focus of that policy, right? Now the ability should of trained teachers must be there, so that the and appropriate pedagogy must be followed. So pedagogy is a way of teaching the students, like what you guys are doing right now is you guys are listening to my video through this YouTube channel, right? Now what will happen is, like, the pedagogy has reformed a bit. Pedagogy has reformed a bit means, earlier आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बार सुन लेते थे, that would have been remained in your mind, or you have to what you have to do was that like आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना पड़ता था. But now you don't have to write in any notes copy. The बना हुआ material is put in internet, and what you can do is, whenever you want to read this national policy for children 2016, then you have to just click on my channel and subscribe, and click the subscribe button, and later see these videos all right. So appropriate pedagogy must be there, and co-curricular activities, provision of co-curricular activities should also be there, so that the children can realize their full potential, and they can live with dignity and self-worth. Means dignity and self-worth of children were also focused on the 2313 policy, है ना. तो बहुत डीपली फोकस्ड किया गया था. एनीवेज, चलिए हमें तो देखना है. नेक्स्ट वाज
the disabled children were to be promoted and strength in family, community, and school level, right? And firstly they were to be strength, right? And the second thing was that any kind of judicial or administrative proceedings which were to be given to, if say for example our children is facing a problem in which he or she needs a judicial or administrative help, right? So those children must be dealt very carefully, and as soon as possible judicial and administrative help should be given to them, right? So this was the fifth policy, guys. Next was like this is very important point, you should write down and jot it down in your note copy. It is the very first policy document in India that specifically highlights the disability as a ground of discrimination, right? This is the very first policy. Not even a single other kind of policy has been framed till yet who would have highlighted the disability as a ground of discrimination. But national children policy 2013 was highlighted as such, right? So this is again becoming a main point, not only from the mains perspective, from prelims also, है ना? prelims में ही ऐसे उठपटांग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो देख लेना ज़रा. अब while framing the 2013 policy क्या हुआ था ना, civil society members were also given their राय, है ना, so that in the final draft, but given their राय while making the draft of that for 2013 policy. But in the final draft many suggestions were not taken, because since it is a national policy, government has to like take all the measures taking in cognizance of whole India, right? So a few policies were dropped from the civil society, but they have tried to incorporate those policies in 2016, huh? So when we will just talk about the 2016 policy, then we'll read it about there, right? But as of now, just let's see this. These provisions are good reflection of United Nations Convention on Right to of Person with Disabilities. ठीक है? ये जो 2013 वाला पॉलिसी बनाया गया है वो that quite good resonates with the United Nations Convention on Right of Person with Disabilities, ठीक है, and right of children with disabilities to express their view freely on all the matters affecting them. और ऐसे इसको emphasize किया गया था जैसे right of children with disabilities वो अलग अपना व्यूज़ एक्सप्रेस कर सके, है ना? जो अगर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो तो उस सेक्टर में दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज़. सो द पॉलिसी वॉज मेड एज सच, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल में ही तो गड़बड़ा जाता है ना, पॉलिसी तो अच्छे फॉर्म हो जाता है. एनीवेज, alright, again rewinding back to the National Action Policy for Children 2016, specifically we'll deal with this now. अब टिल अभी तक जो डील किया था हमने 2013 का पॉलिसी था, नाउ वी विल डील इन नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन 2016. ऑलराइट, सो अगेन दिस, हाँ, see these you have already learned, right? Which ministry has released it, Women of Child and Development, on which occasion, National Girl Child Day 24 January. So you just have to remember this point also, because ये तो भले यूपीएससी में ना है, but any PCS exams can ask it, so you have to be prepared for that also. Then now the next see the priorities area, इसमें 4 प्रायोरिटीज एरिया में डिवाइड कर गया था. अगर आप 2013 का पॉलिसी देखेंगे उसमें कोई प्रायोरिटी एरिया एज सच एक्सप्लिसिटली नहीं डिवाइड किया गया था, उसमें बहुत कुछ दिया गया था. मतलब वही सारे प्रायोरिटी एरिया में यहाँ पर भी आप अगर देखिएगा, बट इसको 4 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है ना, सो दैट होलिस्टिक एंड मोर एफिशिएंट policy could be framed out of this, right? So the very first priority area is survival of children, ठीक है. दूसरा में देखिए health and nutrition was fragmented on the 2013 policy, but here दोनों को एक साथ ले लिया गया है, ठीक है. So the health and nutrition is becoming the second priority area. Third priority area becomes education and development, and fourth is participation and protection. All right, so they will per se not ask what are the 4 priorities area, but since if at all it comes in like prelims, then 4 options will be given, that survival, which are the priorities area: survival, health and nutrition,
है ना, ऐसे ही कुछ उटपटांग देंगे अगर गलत ऑप्शन देना होगा तो। बट इतना तो यार कोई कॉमन सेंस लगा कर भी टिक करके आ सकता है ना, इसके लिए कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, प्रायोरिटीज एरिया उसका डिस्कस कर लिया। अब डिफाइंस ऑब्जेक्टिव्स, सब ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड एक्शन पॉइंट्स एंड इंडिकेटर्स। नाउ ऑब्जेक्टिव जैसे हमने देखा अभी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है जो बच्चे का न्यूट्रिशन पाना है ना। एनी हाउ यू हैव टू अटेन द हिज न्यूट्रिशन लेवल। नाउ व्हाट आर द सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट? सी, अब न्यूट्रिशन के अंडर सब ऑब्जेक्टिव है ना, वो कैसे अटेन किया जाएगा? वो आंगनवाड़ी से जैसे है ना, उसके बाद मिड डे मील है ना, सो दीज विल बी द सब ऑब्जेक्टिव्स, है ना। एक तो पहला न्यूट्रिशन हो गया, अब सब ऑब्जेक्टिव्स हो गया वही आंगनवाड़ी में सबसे कैलोरी वैलोरी इतना इतने बच्चों को इतना कैलोरी मिनिमम देना है, सो दैट बिकम्स द सब ऑब्जेक्टिव्स। नाउ हाउ व्हाट इज द स्ट्रेटजीज, हाउ विल बी द स्ट्रेटजीज, मतलब क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर विल बी से फॉर एग्जांपल कैसे किस में स्ट्रेटजीज लो, हेल्थ में ले लो, है ना। हेल्थ में स्ट्रेटजीज कैसे फॉलो किया जाएगा? जैसे आपका वैक्सीनेशन है ना, इस तारीख को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, ये वो ऐसे ही मतलब स्ट्रेटजीज फॉलो किए जाएंगे। और एक्शन पॉइंट्स एंड इंडिकेटर्स तो हो गया वो मोर्टालिटी रेट वोल्टालिटी रेट वो सब से। एंड एक्शन पॉइंट विल बी लाइक जैसे इसमें बोला ना मैंने, वैक्सीनेशन जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंडर में कोई वैक्सीनेशन जो चिल्ड्रन को दिया जाएगा, है ना। सो दोज विल बी द एक्शन पॉइंट्स, मतलब उन पॉइंट्स को अगर इफ दे गवर्नमेंट विल परफॉर्म दोज पॉइंट्स, देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन विल बी सक्सेसफुल, राइट। सो it defines various objectives, sub-objectives, strategies, action points, and indicators for measuring the progress under the 4 key priority areas, as I've told you already, right? Now, it also identifies the key stakeholders, guys. Key stakeholders means those whosoever are directly or indirectly associated with the health and growth and development of a children. Now, who are the ones who are associated directly? ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये जैसे स्कूल हो गया, है ना, स्कूल इज अ स्टेक होल्डर है। NGOs डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ enhancing the health of चिल्ड्रंस और समथिंग लाइक दैट, तो NGOs भी स्टेक होल्डर्स बन गए, ठीक है। पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स बन गए, है ना। तो गवर्नमेंट तो है ही स्टेक होल्डर यार। तो की स्टेक होल्डर को ये पॉलिसी, अभी वाला जो नया वाला पॉलिसी है, दैट विल आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज। जैसे कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम देना है तो उसको स्कूल, सरकारी स्कूल को बोलेगा भाई अपना कमरा दे दो, है ना, जिससे हम बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम दे सके, वैक्सीन दे सके। तो गवर्नमेंट विल हेल्प। सो these both stakeholders, government and school, will help each other, right, to attain its objective. So इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज में आपका स्टेजेस में ये लोग स्टेक होल्डर्स काम में आएंगे। नाउ दोस्तों, एक बहुत अच्छा जो पॉइंट 2016 वाले पॉलिसी में नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन में जो इंक्लूड किया गया है, दैट फोकस ऑन द न्यू एंड इमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ द चिल्ड्रन। न्यू एंड इमर्जिंग कंसर्न्स मतलब पहले तो खैर डिसेबिलिटी विसेबिलिटी में फोकस किया गया था, पर अभी नया बहुत टाइप के नया इमर्जिंग कंसर्न्स है। जैसे आप लोग देख रहे हैं दैट ऑनलाइन में इतने होते हैं ना उल्टे पटांग काम। तो फॉर चिल्ड्रन सच तो पुट फोकस ऑन न्यू एंड इमर्जिंग कंसर्न जो भी अराइज ऑफ चिल्ड्रन, जैसे किडनैपिंग के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज में है ना, अब्यूजल के केसेस में बच्चों का भी अब्यूज़ होता है ना। तो वो सारे अब देखेगा, जैसे देखिए ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज़ है ना। क्लाइमेट चेंज भी बच्चों को काफ़ी अफेक्ट करता है, स्पेशली द वल्नरेबल चिल्ड्रंस, राइट। नाउ द मैन-मेड डिजास्टर आल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मैन-मेड डिजास्टर कैसे बताओ? जैसे पोल्यूशन है ना, कोई जगह पोल्यूशन हो गया है ना, तो वहाँ के बच्चे, वहाँ पे पानी गंदा होगा, या फिर बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आएगा, उसका हेल्थ खराब होगा, है ना। सो दैट काइंड ऑफ मिस, वही ना बोला मैंने, होलिस्टिक, बहुत ज़्यादा होलिस्टिक ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन 2016 है। तो दिस मस्ट बी फोकस्ड ऑन वेरी कीनली एंड जो भी हो, इंग्लिश वर्ड मुझे आती नहीं है। एनीवेज, द नेक्स्ट इज द स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन पॉइंट्स, है ना। जो भी स्ट्रैटेजीज और एक्शन पॉइंट इस प्लान में लिखा गया है, दैट विल
that should synchronize with the programs and scheme of various ministries and departments. वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैसे हो गया, एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो भी काफ़ी बच्चों के लिए इनिशिएटिव्स चलाती है. एक हेल्थ मिनिस्ट्री हुआ, उसके अंडर तो आता ही है ना. एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है ना. और भी कोई कोई भी अगर हो बाई चांस, और भी अगर आगे मिनिस्ट्रीज आ रही है जो which directly associated with the growth and development of children, so the coordination of each and every ministry will be taken है ना for the achievement of the action points of this 2016 policy. ठीक है. Now दोस्तों, the last point is what I'm going to discuss in this slide is it takes into account the sustainable development goals. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे हंगर, मेल न्यूट्रिशन, ये सब को भी काफ़ी फोकस किया गया है. ठीक है. तो ये वाला जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अपने साथ ले रहा है एंड प्रोवाइड अ रोड मैप टुवर्ड्स अचीविंग देम, है ना, टुवर्ड बाई कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स. ये तो पहले भी डिस्कस कर चुका है, लेकिन मेन जो ये पॉइंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलों में जितने सारे बच्चों के लिए लाइक जितने भी कंसर्न्स है, सो दैट विल बी totally addressed in this policy of 2016. So guys, till now I have completed the whole gamut of this child policy. So if you read this, then you can give any answer whatever is being asked with a few modifications of course, because मैंने 100% यहाँ पे 100% का भी होता ही नहीं है, क्योंकि question will not be as such a direct, this they'll not ask directly right about this policy. So guys, thank you, keep coordinating and subscribe.